there any green color mineral? Yellowish green. Epidote was there? Epidote was there. Okay. Epidote and elastomite. Come. So elastomite कौन से काम में आता है? What is the use of elastamites? Factory में? Refractory. It is used as a refractory mineral. Why? Due to presence of calcium, C, high temperature. High temperature. You saw now, the elastomite comes very close to the Pluton. Those, today I will tell you. So those zones, elastomite is almost the last zone. Then pericles comes and other come. But elastomite is the major mineral, you know, close to a contact. And normally in contact metamorphism it is around 500 degrees centigrade. In contact, normally. But regionally metamorphism, suppose today we will read the regional metamorphism. It is around 700 degrees centigrade. So that is the highest temperature. So that is why elastomite is used as a refractory. Similarly, suppose I ask you in the pellitic assemblages which is a refractory mineral. Suppose pellitic में चले जाइए आप, वहाँ तो elastomite नहीं है. So which mineral is used as a refractory? Andalusite, correct? And cordierite. Okay. Cordierite. Principally cordierite. Cordierite, andalusites. So where is the refractory minerals are used? Which place in the industry? इंडस्ट्री का जो कौन सा प्लेस में ये रिफ्रैक्टर यूज होता है? फर्नेस में. In a furnace where temperature goes very high, you know, minimum 500-600 degree temperature रहता है, either melting हो, कोई burning हो. So there the furnace का जो wall है, उसमें ही बनता है, उसमें बनता है. In addition to that, ये जो आप लोग यूज करते हैं मोटर बाइक या और किसमें कार में जो साइलेंसर होता है, साइलेंसर देखा होगा ना, इतना मोटा एक सिलेंडर जैसा है, उसका चारों तरफ भी, कि वहाँ गर्मी हवा छोड़ता है ना इंजन, तो उसका कांटेक्ट में आएगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, द आयरन पाइप. दैट इज व्हाई a layer of refractory minerals are used there. So उसमें काफ़ी रिसर्च है, हाउ टू प्रिपेयर ए शीट ऑफ रिफ्रैक्टरी मिनरल्स, यू नो, टू कवर दैट सरफेस. सो आप जब गाड़ी चलाते हैं जितना भी गर्म हो वो उसको गर्म नहीं करेगा, और पाइप विल नॉट बी हीटेड अप. इट इज वेरी हॉट, डोंट टच इट, बट स्टिल देन इट इज नॉट दैट हॉट दैट इट विल हॉट यू. तो बट कभी कभी डेंजरस भी हो जाता है, कभी बच्चों लोग लगा देते हैं हाथ, तो इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना वो. But there is a layer of refractory mineral. So elastomite is generally used, but cordierites are very expensive minerals. Cordierites, andalusites, very expensive minerals. But elastomite very easily available. अंबाजी एरिया will go. I think आप लोग जा रहे हैं क्या माइन देखने के लिए elastomite का? आप तो नहीं जा रहे हैं. So there is a mine there. अंबाजी से थोड़ा आगे जाओगे तो there is called बेल का पहाड़. वो पहाड़ में बहुत बेल का पेड़ है, तो वहाँ भरे हुए हैं पूरा एलास्टोनाइट. बड़े बड़े क्रिस्टल्स, इतने बड़े बड़े क्रिस्टल्स, जी भर जाएगा देख के एलास्टोनाइट. तो सो बेल का पहाड़ बोलते हैं. इफ यू टेक्स यू दिस टाइम यू कैन बी लकी टू सी दोज. अदरवाइज इन द फील्ड एरिया जहाँ आप फील्ड करेंगे, मैपिंग करेंगे, वहाँ देयर आर लॉट ऑफ दिस डोलोमाइट मार्बल्स. उसमें रीजनल मेटामॉर्फिज्म भी है प्लस कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म भी है. सो द कंबाइंड इफेक्ट यू विल सी बोथ द थिंग्स and you will find elastomite. Very small grains, but difficult to identify. But if you are acquainted, you will identify it. Looks like feldspar because so much cleavages are there, white color. So, but these are elastonites. You will see this time. So, Shruti. Present, sir.
यासिर, Present, sir. शिवांगी, Yes, sir. दुर्गा माधव, Yes, sir. अनिक, Present, sir. स्मृति पल्लवी, Present, sir. सौम्या, Yes, sir. सुब्रत, Present, sir. आभास, Present, sir. रिया, Present, sir. श्रद्धा, टुडे एब्सेंट, सुब्रनील, Present, sir. आशीष, Present, sir. नवस्मिता, एब्सेंट, सत्यम, शीतल, Present, sir. शिवांगी, Present, sir. शुभांशु, कहाँ चला ये फिर, सूर्यदीप्ता, Present, sir. तमन्ना, नो, आयुष, Present, sir. सीताराम, Present, sir. कृष्णा, Yes, sir. अब्दुल नहीं है, परमिता। So in the last class we discussed about carbon dioxide buffering. Buffering we told. Addition. Why this thing is so important for carbonate rocks, not for pellitic rocks. Pellitic rock में carbonate mineral होता ही नहीं. तो वहाँ यहाँ क्या होता है, रिएक्शन जब होता है, कैल्साइट और डोलोमाइट आर इन्वॉल्व, they will produce silicates. In the reaction they are going to produce either talc, they will produce tremolite or diopside, fosterite, elastonite. Silicates will be produced. So when silicates will be produced, the carbonate which was in the calcite or dolomite, it will be removed. So that will be converted to carbon dioxide. That is why it is so important, carbon dioxide. So if it is an open system, it goes out. If it is a closed system, that choking takes place, that buffering takes place. So कार्बन डाइऑक्साइड का जो वो चैम्बर का अंदर रहता है, वो फिर डिफरेंट मिनरल रिएक्शन को मॉडिफाई करता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है. All those things happens because of buffering. Would you follow this point? Na? If it is open system, no problem. Only temperature will work. Contact metamorphism हो रहा है, regional metamorphism हो रहा है, temperature will work. If it is open system, but if it is a closed system, suppose contact metamorphism थोड़ा deeper level में हुआ, उसका top part is blocked. Regional metamorphism बहुत deep में हो रहा है, तो carbon dioxide will not escape. So then it shows its role. Otherwise it has no role. That buffering is mostly important for this closed system. Open system में इतना नहीं होता है. So what we will do today, I will show you, because we do not have much time, you know, and then basic block I have to also cover. मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ थोड़ा, फिर चलेंगे. ओके, स्टार्टेड ना. पेन लाया नहीं, ये पेन लाया क्या? ठीक. Now you see this diagram I have drawn already. It is with you. थोड़ा छोटा करता हूँ तो काफी ड्राइंग करना पड़ेगा. So this is Pluto ना. This size is okay ना? Yes, sir. So the first zone is pericles, then is elastonite. Brief I am writing, then I am writing D, diopside zone, then tremolite zone, then talc. Then this is your parent rock. This is your parent rock, which is a dolomitic marble. Marble with silica. Now, this rock, generally this chemographic diagram is used to treat this rock or these reactions. What are these reactions? He is telling silica
SiO2 CaO plus MgO. आप लिखो now. This is calcite is here. This is calcite. This is quartz. This what you will write here. You can write periclase or magnesite. Now you see, where is this rock lies? Yeah, this rock, the parent rock. Parent rock he is putting here. You draw a line here, 50% line. This is dolomite, you write. Dolomite has both magnesium and calcium. So this is the place for dolomite. You can see now up to this height. Yes, sir. Now the limestone remains here. The dolomite is here. E. Dolestone or limestone. This is limestone. This is dolestone. Dolestone. Come. Though you cannot distinguish dolomite and dolestone or limestone in thin section, but if you take a analysis, then you can do it. Which place it is lying. So many times, you know, in future, suppose you take up a consultancy work for a limestone factory or limestone mine, you know. So there they ask, you just say whether we will go for mining. Suppose they are doing some tiles work. There you need the marble, pure marble. Now if they need something, you know, for cement factory, they need certain percentage of pure marble is not necessary. Some amount of magnesium is necessary. So they need a dolomite. Dolomitic samples they need. So where is dolomite? Suppose they ask where is the dolomite? Dolomite lies at 50% of calcium and magnesium. So you can do an analysis. If it lies in this field, this side of the diagram, then you see it is a dolomite. It should not also lie very close to this diagram. Then it will be marble. Marble is used for industry, your tiles. So accordingly you can choose. This diagram you should remember. Now what is this field? This field is mostly dominated by the MgO. Calcium is less. Calcium has been reduced to less than 50%. So this side is magnesium field. Now this part, so much of rich in magnesium, you know, it indicates a ultra basic composition. Ultra basic rock with some calcites. With some calcite. इसलिए उसको बोलते हैं कार्बोनेटेड अल्ट्रा बेसिक रॉक. कार्बोनेटेड अल्ट्रा बेसिक रॉक. कार्बोनेटेड अल्ट्रा बेसिक रॉक. Ultra basic rock. So this the metamorphism of this rock we will not deal. We will only deal with the metamorphism of this rock. So remember there are some ophiolites. Ultra basic rocks occurs where? Where are the ultra basic rocks? Ultra basic rocks do not occur in Proterozoic time. If it is occurring in Proterozoic time, they are in the suture zone. When two plates collide, the oceanic crust is squeezed between two plates. That is called a suture zone or insubric line. Insubric, I am writing, suture zone or insubric line. So these are the places where you will find the ultra basic rocks. These are the part of the oceanic crust. Or if you go to Archean time, greenstone belts, in the greens, these are Proterozoic onward. Proterozoic
onward. But if you go to the Archean time, Archean period, that time there are many ultra basic rocks which have intruded into the greenstone belts. So Archean time is marked by greenstone belts. बहुत अल्ट्रा बेसिक रॉक होता है, अल्ट्रा मेफिक रॉक होता है. ये जो अल्ट्रा बेसिक प्रोटॉन्स है उसको भी एंट्री करता है. अंडरस्टैंड माय पॉइंट ना? So these rocks, they always have some calcite veins inside these things, calcite nodules inside these things, because they come from the mantle. So mantle carbonate or mantle carbon dioxide, they infiltrates through this. So these are the ophiolites. I forgot ophiolites. So इसका अंदर वो सब रहता है, अल्ट्रा बेसिक रॉक with some calcareous component. So when they metamorphose, so they produce some serpentine. So serpentine. So if you find some serpentine of Proterozoic age, Proterozoic time का serpentine आपको मिलता है कोई फील्ड में, so what would be your fast interpretation? It could be a suture. Archean time में मिलेगा greenstone belts, but if it is a Proterozoic serpentinites, serpentine का साथ रहता है asbestos. वो सब इंडिकेट करता है दी फ्यूचर लाइन. आप राजस्थान में बहुत है ऐसा, आपके एरिया में है, अंबाजी में है, बट प्रोवाइडेड ही टेक्स यू टू दैट प्लेस. ऑन बेसिस ऑफ दैट पीपल से दिस इज ए सबडक्शन जोन. अरावली में तो बहुत बढ़िया पढ़ा है, बट दिल्ली में भी है. एक फुलाड़ करके जगह है, फुलाड़ करके जगह है, वहाँ यू विल गेट दिस रॉक्स. So it's a फुलाड़ ओफियोलाइट बोलते हैं, फुलाड़ सबडक्शन जोन बोलते हैं. So now there is no subduction, but once upon a time they were there. Would you follow this point now? Okay. I'll remove this part. Archean rock का अंदर मिलेगा तो during Archean time there was no subduction. The mantle was on the floor. Mantle तो ऊपर ही था, तब तो क्रस्ट बना नहीं था ना Archean time. Everything was mantle. So that time there were greenstone belts, there are ultra basic rocks on the surface. So that there was no subduction. But during Proterozoic time, what happened? These oceanic rocks, they are the ultra basic rocks. You will find there. But when the basin closed, ocean closed, those rocks were emplaced in the mountain belt. Sir, ये greenstone belt है क्या? मतलब बहुत बार नाम सुने, but इसके बारे में पता नहीं है. Greenstone belt. So they are the Archean rock component. Archean बताओ कहाँ है अपना Archean terrain अपना इंडिया में? धरवाड़. They are called crater. सिंघुम भी है. Similarly, कहाँ? धरवाड़ is fine. Our Singhum is fine. Bhandara Kata, Bastar or Bhandara Kata, Central India part. Then you go to Bundelkhand. These are the areas. So out of all these areas, Dharwar is the place you will get many greenstone rocks. वो greenstone rock का sequence एक होता है. ये Archean time में ना, Archean time में mantle was very close. So from the mantle itself, rock were coming and spreading over the earth. During Archean time, lot of volcanism was taking place. So those lava were basic to ultra basic in nature, mostly ultra basic. MgO value was very high MgO values. So when they spread, they produce very ultra basic terrains, you can say. So one of the important component of greenstone belt is comatite, peridotites,
बोनीनाइट, चलो ठीक है। तो these are the rocks, you know, which are present in the greenstone belts. But follow this point now. But comatite you remember. Comatite is characteristics of greenstone belts. तो इतना magnesium rich rocks are there. So those rocks, you know, when metamorphose, उसका अंदर कार्बोनेट रहता है, as I told you, मेंटल कार्बोनेट भी आ जाता है। So in the metamorphose, ये जो कैल्शियम है, कैल्साइट है और कार्बन डाइऑक्साइड है, they buffer it, they participate during metamorphism. So उसी वक्त ये सब बनते हैं, ये सर्पेंटिन, एस्बेस्टस, ये सब बनेंगे। तो आप ग्रीनस्टोन बेल्ट में और क्या मिलेगा? BIF मिलेगा, बेंडेड आयरन फॉर्मेशन। इज ए पार्ट ऑफ ग्रीनस्टोन, पार्ट ऑफ ग्रीनस्टोन। इंडिया में आयरन ओर कहाँ है? बताओ एक दो डिपॉजिट। अरे उड़ीसा में, इंडिया जागा तो बताओ कहीं। नुआसाई, गोरुमईसाणी, बादाम पहाड़, दीज आर द आयरन ओर बेल्ट्स। कोयरा, उड़ीसा की बात कर, जामदा कोयरा। और कहाँ है? उड़ीसा चलो छोड़ो अभी तो। और दूसरा जाओ, कुद्रेमुख किधर है? धरवार में, धरवार में। और कहाँ है बताओ थोड़ा? और कहाँ आयरन ओर है? छत्तीसगढ़ में बाबा बुदन, बाबा बुदन भी धरवार में है। छत्तीसगढ़ तो बोला, ठीक बोला, लेकिन वो डिपॉजिट कैन आई वाज वेटिंग फॉर दैट आंसर। बाबा बुदन ठीक बोला, वो धरवार का अंदर। जो कुद्रेमुख बोला ना, वो धरवार में है। बाबा बुदन भी धरवार में है। आयरन ओर फाउंड इन द MP छत्तीसगढ़ में क्या है? बैलाडिला, बैलाडिला, बैलाडिला आयरन, बैलाडिला उसको बोलते हैं। सो जस्ट लेट मी टेल यू, दिस ओडिशा आयरन ओर मीन सिंघभूम क्रैटन आयरन ओर और धरवार आयरन ओर, दे आर आर्कियन, दे आर कन्फाइंड टू क्रैटन ग्रीनस्टोन बेल्ट्स। बट ये जो बैलाडिला का जो आयरन ओर है ना, दिस इज नॉट प्रोटोजोइक एज, सॉरी दिस इज नॉट आर्कियन एज, दिस इज प्रोटोजोइक एज। बैलाडिला पार्ट है ना, वो आर्कियन नहीं है, वो प्रोटोजोइक है। मेरा बात समझाना। सो दिस इज डिस्टिंक्शन। जब आर्कियन एज का जो BIF है, they are associated with the greenstone belts. Those BIFs are algoma type. algoma क्या है? वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है समुद्र में, वो जो आयरन निकल गया वो डिपॉजिट होता है, समझा ना? वो ग्रीनस्टोन बेल्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। बट प्रोटोजोइक टाइम में जो आयरन ओर है उसको बोलते हैं लेक सुपीरियर टाइप, सुपीरियर टाइप ऑफ आयरन ओर। आल्गोमा एक है, वो वोल्केनिक इरप्शन के साथ along with the other greenstone rocks they associate। जैसे आपका कुद्रेमुख हो, बाबा बुदन हो, या ओडिशा का जो आयरन ओर ग्रुप हो, वो सब वो वेराइटी का ग्रीनस्टोन बेल्ट का अंदर। बट इसमें जो प्रोटोजोइक रॉक में है, बैलाडिला में, वो सब लेक सुपीरियर का मतलब ये है, बेसिन तो है बट द आयरन ओर्स आर नॉट फ्रॉम वोल्केनिक एक्सहालेशन।